Namaskar, good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. We are here celebrating the 100 years of Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar through our series known as Reflections, sharing the memories of that great stalwart of the Indian classical music. Today, by you people's love and affection, we have reached our 45th episode, and soon we are near to our 50th episode with many announcements on that episode. Today, the guest whom we are going to invite, she is basically from Lucknow and was a child prodigy reveling in Kathakali and Manipuri. Then she switched off from dancing to singing as a disciple of Begum Akhtar Sahib ji, and she is none other than Padmashree Srimati Rita Ganguly. On behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I welcome Rita Ganguly ji. Didi, namaskar. नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, नाइस टू सी यू बहुत दीदी, खुशी की बात है। नाइस टू आप सी इतना यू। अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये भारत रत्न नहीं है, ये कोहिनूर है दुनिया के मौसीकी में। जी जी, सिर्फ रत्न नहीं, ये कोहिनूर है जो कि अकेले में है दुनिया में। जी 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 जी। इनके लिए कितना भी कहा जाए कम है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, absolutely true. And to speak with you in the conversation, a senior most disciple of that Kohinoor, and he is Gaurav Mazumdar, the senior most disciple of Pandit ji. I'm aware of that because I presented her as the torch bearer of Ravi Shankar Gharana. Very hardly last year. Yeah. Over to Gaurav da. दीदी प्रणाम। बेचे ताको। So What a pleasure to I'm meet very. you, Didi. Gaurav presented his program as a torchbearer and charah of Ravi Shankar Gharana, and he played something which was outstanding. It was Ravi Shankar ji in his young days. I was so happy because I'm literally disturbed because everybody is changing their style. Ravi, you must keep the authenticity. Pandit ji is the only person who opened the entire Western world to all the musicians. So, entire music fraternity should be ever grateful to him. Till then, nobody, the Western world, thought we are the land of snakes and kings and queens, land of gold, only the solid gold, not the gold of music and performing. It was, she is a Ratna Garbha, whoever is the mother of all these brilliant children, Uday Shankar and Ravi Shankar. It is Ravi Shankar who made the Indian performing art popular. But mind you, everybody today talks that I've played in Edinburgh, I played in such and such, I've played in that. Damn it, they don't say that I played in Bhimsen Joshi's Savai Gandharva festival. They don't say that I've played in Jalandhar's festival Harballam. Why is it? But all this is possible because Pandit ji opened the entire market throughout the world of Indian musicians being appreciated. Till then, nobody appreciated. That is the main problem. It is so the entire music world should be ever grateful to this grand man. Thank you. कहना भारत रत्न कहना काफी नहीं, वो कभी नहीं था। अकेले रत्न तो बहुत होते हैं,
वो रत्न नहीं है, मामूली रत्न नहीं है। उनकी तरह इतना ग्रैंड ह्यूमन बीइंग, you know, he, of course, he must have been there. Must have been, yes, they were all there. When I started my stupid career as a child prodigy at the age of 2.5. Let me tell you, I may be the senior most artist, so-called artist, who knows Panditji, who knows Robuda, and who can talk authentically. And only one thing, which again is a training of Ravi Shankar. I don't tell lies. So I'm very unpopular also. I cannot appreciate if somebody is not good. Sorry, I will not. Why should I? क्योंकि फर्क है, फर्क ये है, वो मुझे इसका भी ज्ञान पंडित जी ने दिया. I was doing a research on professional singing musicians. So when I went to Ravuda, he said, do one thing, that you should know that the people who are from professional families, we are not Ayu, not Ravi Shankar, not Uday Shankar. They have an advantage. They have a special advantage. It's only me and your Ustad Bibbi, Akhtari Bai Faizabadi, who are not from professional world, yet made a name and defeated them in their own profession. What do you mean by that? Everybody says, Akhtari Bai Faizabadi, she was a professional singer. No, she was not. So that put me in search. That is what my Ustad also said. That is what put me in search of what is the authenticity of the wife, what is the sociological background, and what is the origin of music, who were the people. And every moment that I did this research, it was not easy at all. All the professional people, men, did not help me. क्योंकि वो आप खोदने जाओ पहाड़ तो वो क्या निकलेगा, चूहा नहीं, सांप निकलेगा, और निकला भी, जो कि हमारे मरने के बाद निकलेगा, हमारी किताब, उससे पहले नहीं. लेकिन पंडित जी थ्रू आउट, मैं जहां जहां अप्लाई करी, और ऑल दैट बिकॉज ऑफ पंडित जी, वहां वहां मुझे रिजेक्ट हुआ, क्योंकि सब जगह एक प्रोफेशनल आदमी है. ऐसा क्या, क्योंकि उनके सब चीज पता चल जाएगा. Pandit Ravi Shankar did not come from professional family, nor did Begum Akhtar. The name of Bagh, Begum Akhtar Academy of Ghazal, was also named by Pandit ji. He said, Begum Akhtar Academy tum khol rahe ho, my blessings. He was one of our life member. He said, खोलो, लेकिन ये याद रखो, बाग में मुख्तलिफ अंदाज के फूल खिलते हैं. अरे पंडित जी सिर्फ सितारी नहीं बजाते थे, हर बात फूल की तरह झड़ती थी उनके मुंह से. क्योंकि ये रविशंकर की ने कहा कि एक बाग में ये जरूरी नहीं सिर्फ गुलाबी खिले, जूही, बेला, चमेली सब खिलते. तो ये बाग रखो, बेगम अख्तर एकेडमी ऑफ ghazal. ये नाम भी, let me tell you, you may not be knowing, under which you performed is the only idara of ghazal training. Thanks to all the great shahs who were with me, including Kafi and Ali Sardar Jafri. All of them that came forward and helped me. And let me tell you one thing, that Panditji had a unique talent of
making things easy. But he, this gentleman who came from Almora and his name was Nixon, and he was Gopal Krishnan, and he whenever, as long as he stayed there, he sang. He told me, "Yatra mat bhakta gayante, tatra vasami aham." तो मेरी सर्च तो थी, वो गाना सुनना है, ऐसे क्या गायन थे। तो मैंने एक बार रघुदा को पूछा, रघुदा ये क्या गाना है? लोग कहते हैं कि ये नया शुरू हुआ गाना है, तो लोग गाना गाते हैं और उसके साथ सितार भी बजाते हैं, आप तो नहीं करते। बोले क्यों? हमारा सितार ही गाना है, तुमको बंदिश क्यों गाना है? ये बहुत बड़ी बात है। क्या मेरा साज काफी नहीं है? बात सच है। चाहे उन्होंने यहूदी मेनवेन के साथ बजाया, who is a classical performer of first order in abroad, or Beatles, he has never compromised his own music. Never. He has never taken 3 or 4 tabliyas. He has never taken in his own concert. Maximum he had a pakhavaj, and he never compromised. He never changed his music. No. You, all of you must understand. You need not westernize your training, because your guru never did. And that is salute to this grand man. He never, there are so many recordings available. Yehudi men will try to imitate Prabhupada, but he has not. He never compromised. And that's the lesson. Why do you have to change? जहां जिसके बाज में, जिसके मौसीकी में स्वयं ईश्वर विराजते हैं, तत्र वसामि अहम्, उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? ये कॉन्फिडेंस एकमात्र पंडित रविशंकर जी में था। वो उनकी 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 पहचान मेरी बहुत पहले हुई थी। एक्सीडेंटली में आई बिकेम अ लेजेंड चाइल्ड प्रोडिजी, बेबी रीता, रबिश। Actually, Srimati Tagore, daughter-in-law of the Nobel laureate, was invited to Lucknow to do some program, so to raise fund. And in that she gave 3 months rehearsal, because this is also for archival things, what I'm saying, very few people will say. Let me tell you, today I'm 80 years old. And I don't know why people hide them. There are many people, legendary people, who have been born with me in the same year, same day, but they're all going down. They have not crossed 60 even. I don't know why. ऐसे ही थोड़ी हम 80 साल निकाले, और 80 साल की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा जब मैं पंडित रविशंकर से मिली हूँ। I am not fan of anybody, but yes, दीवाना बर प्यार है एक नाम से, वो है रविशंकर। I am fan of रविशंकर and कुरोसावा। ये 2 नाम है, सुनने से मेरे तो दिमाग खराब हो जाता है 16 साल की लड़की के साथ। He was not a flirt. Women couldn't resist themselves. It's their fault. वो कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागे। ये भी जानी होगी, चरित्र और संगीत सभी तो हमको एनालाइज करना है ना, एक रिकॉर्ड तो रखना है ना। एक अगर आप देखें मिनिएचर पेंटिंग में 10 कृष्ण नाच रहे हैं 10 गोपियों के साथ, वो क्या है? ये गोपियों की इमेजिनेशन। और वो जहां भी जिससे भी उन्होंने संपर्क किया, he has been very, very sincere.
बट एक्चुअली जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं उनका कोई माशूका नहीं होता या आशिक नहीं, वही होता पहले। तब बेवकूफ है उसके पीछे क्यों भाग रहे, जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, हम जब एक बार शांति निकेतन में थे, मैं महज 12 की थी, जबकि मैंने स्कूलिंग खत्म कर ली थी। एक्सीडेंट, आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, बट ऑलवेज it is Baba who said that don't let your child, a girl, dance or sing anything beyond 10. So anyhow, since I was a good student, I was sent to Shantiniketan and I joined my graduation course, and I had 4 subjects to do my degree: classical music, Ravindra Sangeet, Kathakali Nritya, and Manipuri Nritya. And Manipuri Nritya mein kaun? Amove Singh, one of the greatest names. And today I'm the only living disciple of Amove Singh. And nothing I've forgotten. Nothing. And then one day, my principal said that today, those days, it was a great name. K.M. Munshi, a great social worker and a great person, came with Vidya Munshi, his wife. And then, of course, it was not a big name those days. And then the Maihar Gharana disciple, Ravi Shankar ji is also coming. Now somebody else was supposed to be singing, and I was supposed to be dancing. I was an established dancer in Ravindranath's repertoire. But last moment, when there was, of course, because I did join Hindustani classical music, sheer, just out of curiosity, not that I was serious. My Panditji, my Ustadji called me, a brilliant singer. He said, Rita, बहुत मुश्किल हो गया कि बेटा वो बीमार हो गई, शिखा तो बीमार हो गई, अब क्या होगा, कौन गाएगा? तो मैंने कहा आप हमें रामकली सिखा रहे हैं ना, वो मैं गा लूंगी। नॉट ये पता नहीं कि रविशंकर कौन है, नहीं तो कभी बोलती मैं। तो ठीक है, आप जल्दी से, विलंबित तो नहीं पता, विलंबित जल्दी सिखाइए। तो ले सा को पूरन हो तो तेरो नाम। I did not know whom I'm singing for. And I was very lucky, let me tell you that. My local guardian was the vice chancellor, that is Satyen Bose and Einstein fame. So he said, "Kya ho raha hai?" One of the girls singing. I thought she was a dancer. Why are you making them sing? The girl never came. So, okay. So I sang. And after 4 items, I danced also. Naturally, everybody was gaga about my dancing. After the whole thing was made. Now, I'm telling you, this is Ravi Shankar, different than others. And he said, thank you. I said, no, sir, we all want orchestra to play. We did not, those days, he was not all that well known, Panditji. He's from K.M. Munshi. We want our staff of Maihar, Wo Gharana, of the great Gaudiya Gharana. His name was Ashish Bandabad. He was a genius. So first item was, the next item was the musical story in Sangeet Bhavan. Panditji played. Wow, what a brilliant performance. After that, we all requested, Ashita, please, to Bhajan. He played. I mean, he was not an ordinary musician. He was a Farishta. He played. And Ravuda got up and पैर पकड़ लिए। ये देखिए ऑनेस्टी इस आदमी का। मैंने आपके सामने बजाया, अरे बाबा,
क्या कहने कैसे आपने ईश्वर को अपने गाने में वाकई ही was brilliant. Brilliant is not the word. There is no recording, no record of whatsoever. That's why whatever you people are doing is brilliant. Nobody knows what he played. He was a genius, freak of nature. And after that, Rahuda looked at me and said, "Oh, you dance. But I like the timbre of your voice. Why don't you sing?" Ustadji came from, "Look at this girl, she does not want to sing. She's more interested in da 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 da." And he started miming me. My Ustad. I said, "No, no. Good, she's learning. Ustadji kyun farak fikr kar raha?" Next few months' time, I got a call from 2 or 3 music conferences to go and dance. So my mother also went. One of the programs was in Katihar. In that, Pandit Ravi Shankar and Kishan Maharaj. Because in Bihar, it's not the artist, it's the tablia who sells. So he was playing. And after that, I mean, of course, I danced and lot of appreciation. He called me backstage. He said, "Rita, you danced very well. It's I who recommended your name. Thank you, beta. You kept my pride. But don't you think you should sing?" I said, "Rita, it's not in me. I'm sorry. I don't think so I can sing. I know the Lord lives in the good music. I don't think so I can." "Lord lives? What do you mean by that?" I said, "Like when you play, I played the other day, I could see God in your music." He was very happy. He says, "Good, you think like that. आ जाओ हमारे कमरे में, आ जाओ." तो बरामदे में ले गए और आपके पास अगर थोड़ा बजा दे, क्योंकि हमारे साथ हमने बुलाया है another grand musicians, घराने के एक आदमी, वो है पन्नालाल को, who discovered this bada fruit. You must understand that till then there was no big fruit. He saw it in his dream and he made this. And that's a beautiful, which will be Gharana later on. He is also from Maihar Gharana. Right? So Okay, I'll Devi. invite Sudeep Chattopadhyay, Pandit Sudeep Chattopadhyay. He's a top grade artist now. He's a brilliant player. And like you, Sudeep Chattopadhyay, Ghulam Niaz Khan of Saswan Gharana, you in Maihar Gharana, all these people, you are the real hope. You with your children performing, your students performing, slowly will become a Ravi Shankar Gharana. It's in your shoulders to make Gharana. Gharana you cannot change. Now nobody called Agra Gharana is Fayyaz Khan Gharana, though everybody imitates. Agra Gharana means they imitate. But one Gharana cannot be imitated, it's Patiala Gharana. Because he was freak of nature, like our Pandit. He was avatar of Bosung, बड़े गुलाम अली खान साहब. क्या गाया वो कोई नहीं कर सकते, बात खत्म. उसको नहीं आप मुकाबला कर सकते. लेकिन जब पंडित जी बजाते थे, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है. एक बार मैं कहाँ गा रहे, बिहार में कहीं था, पटना में था शायद, एक प्रोग्राम में हम जाके उनसे मिले. पंडित जी बोले, "रीता, আমার এই ব্রিফকেসটা নিয়ে যাস তো?" বললো, "নিশ্চয়ই." আমি ঠিক যখন ঢুকবো না, when I entered my stage,
There is a kurta. इतना बड़ा आदमी, हिंदुस्तान की दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, स्टेज में जाने से पहले इतना घबराते थे. Well, look at his sincerity कि उनको कपड़ा बदलना पड़ता था, वो भीग जाता था. It used to be drenched in his perspiration. That shows how sincere he was. ये मामूली बात नहीं, ये आप मजाक में मत लीजिए कि एक इंसान जो भारत रत्न बना, जिसने सारी हिंदुस्तान को एक नया गेट खोल दिया मौसीकी का, वो हर प्रोग्राम से पहले कितना सिंसियर. ये भी तो सीखने वाली बात है. आपकी नींद उड़ जाती थी, वो बात नहीं करते थे किसी से. फिर मैंने कहा, रुबुदा, I mean, I'm sorry, I may be talking something rubbish, but it should be recorded. This is what he said. मैंने कहा, रुबुदा, आजकल लोग ये क्या हो रहा है? पहले तो ठीक है, लोग कहते गायकी अंग क्या होता है साज में. उन्होंने कहा कि रीता, ऐसा है, अगर आपको अपने साज में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ये अंग वो अंग बोलते रहिए. ये अंग वो अंग बोलिए मत. हमारा मौसीकी काफी नहीं है क्या? गाने का क्यों, किसी एक बंदिश को क्यों हमें डिपेंड करना पड़ेगा? हमारे गाने से ही अदा होगी कि वो गायकी अंग क्या होता है. हाँ, आप एक ठुमरी का आवाज गुनगुना दीजिए. You'll be surprised. आजकल जो मैहर घराना का नाम लेके बजाते हैं, वो पूरी बंदिश गा देते हैं. यानी आपका अपना साज काफी नहीं है, आपको साहित्य का जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, किसी की बंदिश की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी. नहीं चाहिए. वो खालिस जो उनका बजाना था, which came from Drupad, so sometimes he did take पखावज. अपने गाने के साथ शहनाई भी ले लिया, ये भी ले लिया, कोई जरूरत नहीं. अरे रविशंकर कुछ नहीं लेता था. सारी दुनिया में, चाहे वो जैज हो, चाहे क्लासिकल हो, वेस्टर्न, चाहे हिंदुस्तानी क्लासिकल हो, सबके वो खुदा थे. That's why I said he is खुदाए मौसीकी. He is not just a musician. No, don't you make that mistake. And that is why, Nabarun, I congratulate you what you've started. It's a brilliant work you've started. Every word of his should be really, and we should all clap for your brilliant effort and preserve it. What I'm saying, even this perspiration story is important to keep. That a performing artist who has already achieved everything in his life, even then when he goes to the stage, he's so sincere that he's nervous. He's not overconfident. Isn't that brilliant? Now, he once, Robuda told me, तुम क्या कर रही हो आजकल? मैंने कहा nobody knows that it is Siddheshwari Devi who first picked me up from Shambhu Maharaj's class and started teaching. उनकी गंडा बंद शागिर्द अकेली में. अब माँ कहती थी, किसी को नहीं पता. क्यों नहीं पता? क्योंकि बेगम अख्तर is many more well known. There is no record of Siddheshwari Devi. And you know, once I went to a program with Amma late in the night in Rang Mahal in Bombay and in Dhobighat. So the last item was Amma's, and Kesar Bai Kerkar was singing. And when we entered, she had just started
केसर बाई केरकर, जिनकी 3-4 आवर्तन विलंबित ख्याल के सांस चलता, बीच में सांस नहीं लेते, ऐसे भयंकर गायिका थी, अद्भुत। वो गाना शुरू किया ही था बाबुल मोरा, अम्मा अंदर गई, शी स्टॉप, शी अनाउंस्ड, अभी साक्षात सरस्वती ठुमरी की आ रही है, इसके बाद हम नहीं कर सकते। शी गॉट अप, केम डाउन एंड साष्टांग प्रणाम सिद्धेश्वरी जी को किया और कहा कि अम्मा, आपके सामने कोई भी बंदा नहीं गा सकता। तो ये लेवल था उनका गाने, कोई रिकॉर्ड नहीं। आखिरी दिनों में मैंने विमान खोट खोल के बड़ी मुश्किल से एक एलपी निकाला, वो भी उनकी चॉइस की नहीं, उन्होंने बोला क्या सेल होगा क्या नहीं सेल। We have lost so many precious things. It is from her, Begum Akhtar heard me and picked me up. And they said, I told her, I'm sorry. I'm learning from Siddheshwari Devi. I don't want to learn from you. Says, okay. तुम क्यों? दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, तुम एक और गुरु से सीखो तो क्या मुश्किल है? चलो हम सुरेश्वरी से मिलते हैं। सुरेश्वरी यानी हमारी उस्ताद सिद्धेश्वरी देवी। वहां गई सुरेश्वरी, ओ अख्तरी आप तो बेगम भाई हो, आवा आवा आवा। रात के 11 बजे उन्होंने कहा क्या चाहिए इस बिटिया को। उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये क्या मांग लिया जिंदगी में पहली मांगा। अरे तो हमारा कलेजा मांग रही हो, तुमने दे दो ना, कभी तुम मांगती आई हो, अब मांगते आए मुझे मिलता रहा और तुमको नहीं मिला, तुम जानो मैं तो मांगते आई हूँ। और क्या मतलब, तुम जिंदगी में मांगती ही आई और क्या, और मुझे मिला नहीं, अब दे दो। क्या करोगे इसको? 1.5 घंटा एक बोल से दूसरी बोलना जाए ऐसे तालीम दी, तुम क्या सिखाओगे? 3-3 मिनट के रिकॉर्ड देखो। हमारे छोटी उस्ताद बेगम अख्तर साहब उन्होंने कहा, हंसने लगी, बोले आजकल किसको दम है 3 मिनट से ऊपर रहने का, वो भी तो सिखाओ, उसको आवाज फेंकना भी तो सिखाओ। तब it struck me again here, Rabuda is connected. रघुदा ने कहा कि रीता, गायकी में जैसे हम लोगों का जो अंदाज है सितार में स्ट्रोक का, वैसे म्यूजिशियंस के भी अलग अलग प्रोडक्शन होता है, वॉइस प्रोडक्शन। हम लोगों ने सितार में अलग अलग इजाद किया है, टोनल क्वालिटी अलग होता है। तो तुम्हें अख्तरी से सीखने के लिए ये वॉइस प्रोडक्शन शायद बदलना पड़े, मुझे नहीं पता। मैं रविदा से पूछा था क्या करें, ये मांग रही है, अम्मा ने दे भी दिया, अम्मा ने दे भी दिया और गंडाबंद की रस्म भी पूरी हुई। और अम्मा ने कहा कि जाओ बेटा हमारे चाबी लेके जाओ जाओ। और उन्हें बनारसी साड़ी लेके कहा कि ये फकीर की बेटी को तुम नहीं ले रहे हो, दो गुरु को दो। वो भी सिद्धेश्वरी जी ने दिया और बाई तालीम स्टार्ट। अम्मी कहती थी, बेटा जो रविशंकर जी का गाना है, यानी बजाना है उसका में, वो साज नहीं है, वो गाना है, और वो 24 कैरेट का सोना है। This was the comment of Begum Akhtar of Pandit Ravi Shankar ji. She was a fan of Vilayat Khan's music. This is, अगर तुम्हें खालिस गाना सुनना है तब तो रविशंकर से। Can you imagine? It is, she said, nobody can create that charisma, that वो एक जो जादू है, अपना पर्सनल रोना धोना नहीं, एक जादू है कि आप सुनने जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता आप किस दुनिया में। ये रीता गांगुली का कमेंट नहीं है,
ये बेगम अख्तर का काम, वो दुनिया बदल जाती है जब पंडित रविशंकर बजाते। अरे अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और वो ऐसे ही करिश्मा पैदा करते रहे। बहुत सुंदर उनकी आइडियाज थी। तो मैं जब उन्होंने आपको कहा था कि बेटा मुझे जिंदा रखना, इसीलिए आपको क्या, मैं क्या जिंदा अपने गाने से तो मैं नहीं रखा, उनका गाना ही अलग था। तो मैं हर साल पिछले 45 साल से, मैं 80 साल की हूँ, 45 साल से मैं उनकी बरसी करती हूँ, बरसी नहीं जन्मदिन, और जन्मदिन करती हूँ थ्रू बाग, और द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कलाधर्मी, वो अम्मी का दिया हुआ है। बेटा कुछ शुरू करते हैं ताकि हम इनको सबको बुलाएं। और उन्होंने कहा कि अच्छा ये बता मजहब का हिंदी क्या है, बंगला क्या है? बंगला तो नहीं, हिंदी लिखी धर्म, तो रखो कलाधर्मी। फिर हम गौरव के पास गए, उन्होंने अपनी सिंधी भैरवी बेगम अख्तर के नाम पे दिया, फॉरन, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वाल्म्स अबाउट इट। का क्या नाम रख रही हो इंस्टीट्यूशन का? मैंने कहा आप बोलिए। बाग रखो, एक बाग में मुख्तलिफ फूल खिलते हैं, और ये जरूरी नहीं मुख्तलिफ फूल खिले, देखो हमारे उस्ताद के हर एक फूल की खुशबू है। पंडित जी बस अवेयर वो कौन से घराने को बिलोंग करते हैं। हमारे खानदान में कोई भी एक दूसरे का नकल नहीं, चाहे वो निखिल हो, खैर दादा तो अलग बात है यानी अलियन पर, और चाहे वो जो हो चाहे जो भी हो, सब मुख्तलिफ अंदाज के गाना गाते हैं, लेकिन गाते हैं खालिस। ये बात समझना बहुत जरूरी है गौरव, तुम्हारे लिए भी। कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपने कभी नहीं सुना कि कि वो कुछ और बजा रहे हैं या किसी वेस्टर्नर के साथ बजा रहे हैं तो उन्होंने कुछ एडजस्ट किया है, कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं यहूदी मिनमिन के साथ, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं अलग बीटल्स के साथ। क्या पंडित रविशंकर खुदाए मौसीकी कभी अपनी मौसीकी को कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। अब आप और कुछ पूछिए पहले, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ। दीदी आप क्वेश्चंस हैं? कुछ गाना सुनाना चाहते थे आप? हाँ, आपने कुछ रिकॉर्डिंग आपने मैंने कहा ना, वो मैंने इसको सुदीप चट्टोपाध्याय, पंडित सुदीप चट्टोपाध्याय को बुलाया है कि हमें थोड़ा सा सुनाए, क्योंकि ये थोड़ा अभी घराने के वो पन्नालाल घोष की स्टाइल पे बजाते जी, तो अभी चलाएं उसको हम लोग। अच्छा ये क्या है? ये एक गाना पंडित जी ने हमें सिखाया था जब मैं सिर्फ नाचती थी। उन्होंने रियाज करने का अंदाज कैसे समझाया, हमें ओम कहना प्रभुदा ने सिखाया। Shall we play that song, दीदी? क्या उस गाने को हम लोग प्ले करें? ना वेट वो कथा बोलचे सुने ने, प्लीज लिसन। हाँ? लिसन, या बोलिए दीदी, बोलिए प्लीज। वो उन्होंने कहा ओम बताओ, ये कटिहार में सिखाया था, ओम बोलो। हम लोग आए 5 साल इस तरह से ओम बोलो, ओम ये चाहिए। और उसके बाद ये बंदिश सिखाए, हे नाथ हम पर कृपा कीजिए, दूर कर अंधकार, ज्ञान का आलोक दीजिए, हिंसा लोभ क्रोध हमसे दूर कीजिए, मन में प्रेम शांति भर दीजिए। अरे मुझे ये कविता जब बोलते थे अद्भुत, उसका एक नमूना सुन ली मैंने। सुदीप को रिक्वेस्ट किया, सुदीप चलो वहां चलते हैं दूसरी जगह, क्योंकि हम दोनों यहाँ नहीं बैठ सकेंगे। चलो हम लोग
सुदीप भी बजाएंगे। आधे मिनट का ये बंदिश है जो उन्होंने सिखाया। उन्होंने हमको ये भी कह दिया प्रोग्राम में जाने से पहले मन मन में गा लेना, तो ईश्वर तुम्हारे साथ रहे। ये मैंने अपने सीक्रेट बोल दी, लेकिन बात सच। एबार बाजो। चलो बेटा। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। It's absolutely outstanding. क्या बात दीदी, क्या बात है। What a beautiful song, Didi. What a beautiful song. थैंक यू। ऑल क्रेडिट टू रघुदा। हम जैसे बेवकूफों को भी गवा लिया। The entire credit I give it to him. So I am maybe the happiest to come live in your program. Now, अब आप प्रश्न कुछ भी है, I'm sure गौरव के और आपके बहुत फैंस हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। अगर मैं जानती हूँ तो जरूर जवाब दूंगी। दीदी, just I want to mention कि Sukanya ji, our Chinnamma Guruji's dear wife, she is watching from London and she sends her love and regards to you, and she's saying I am having goosebumps listening to you. It is so wonderful, so precious what you are sharing with us. It is a personality called Ravi Shankar who gives goosebumps to everybody. He need not be a flirt. Even now, after he's no more with us, people fall in love with him. Yeah.
क्या इंसान, क्या खूबसूरत इंसान, क्या खूबसूरत इंसान, ऐसे हिंदुस्तान ने नहीं पैदा किया। बेहतर म्यूजिशियन शायद किया हुआ है, बेहतर एंटरटेनर शायद पैदा किया है, लेकिन यत्र मद भक्ता गायन्ते तत्र वसामि अहम, ये तो रविशंकर। हाँ नवारुण, पूछो क्या पूछना है। दीदी आप अगर तो सब आंसर बता रही। जानते तो बोलेंगे। दीदी, the question Gaurav is supposed to ask, but still anyhow, what came to your mind when you heard about the day that Pandit ji is no more? What? I cannot hear you When actually. you heard the news that Pandit ji is no more, I didn't want to believe it. And I closed my doors for 5-6 days. And my family people were all scared what has happened to Ma. I mean, I couldn't take it. And now, even now, I don't think so is not there. अभी भी मुझे लगता है कि Robuda is abroad and he'll come back. He cannot leave. I do not believe it. He cannot leave. Can you imagine? I did a serial on performing art called Naman, where all the top dancers involved themselves, called Naman. And Robida said, तो क्या कर रही है? मैंने कहा ये कर रहे हैं। म्यूजिक कौन कर रहा है? मैंने कहा देख रहे हो। अरे क्या कहने, बड़ी हिम्मत, मैं करूंगा। Robida, Ravi Shankar music, अरे यार, they will not be able to pay. उससे कौन पैसा मांग रहा है? पैसा कौन मांग रहा है? रीता गांगुली अगर सीरियल करेगी तो मैं म्यूजिक दूंगा। He was a generous man. कौन कहता है कि उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ प्रमोट किया? नहीं, उनकी शागिर्द की हालत खराब थी तो उन्होंने कहा कि चलो बंबई में कॉन्सर्ट रखो और फंड रेज करो। बहुत बहुत बड़े इंसान थे, दिल के बहुत बड़े थे। एंड लेट मी टेल यू, अगर वो कहीं सुनती है तो बोलिए कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू सुकन्या कि उन्होंने इनका बागडोर संभाला। ये कहना बहुत आसान है, रबुदा रबुदा। उनको वो जब प्रोग्राम के बाद वापस जाते थे, उनके कपड़े बदलने, उनके लायक खूबसूरत खाना देना, उनका माथा पोंछ देना कौन करेगा? कोई किया क्या? कितने भी बड़े फैन हैं आप, किया क्या? ये एक लड़की करी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि एक ईश्वर तुल्य इंसान को बरकरार रखा। बोलना बहुत आसान है, क्या बात करना आई एम very very grateful to her. In case she's listening, or if you get a chance to tell her, say that. yeah, she is live. She's listening to you. She's listening to you. She is listening to you live and she is sending a lot of messages. I better read all these messages for you. She's saying, so sweet. She's saying, I love you. And she's saying, I'm crying. How nice. How nice. কে শুনতে পাচ্ছি না কিছু। বড় বড়। উনি বলছেন আপনাকে, she is listening live and she is in tears. She is crying. The entire Indian community, music lovers, are grateful. I'm so happy that people who genuinely, the Rasikas who are listening to this, that they're giving some time. I'm no one. Who am I in the world of music? Nothing. But yes, my bhakti,
my devotion, my loyalty to Ravi Shankar, Khudaye Mausuki will always remain as long as I live. And I'm happy that his two children are doing very well. But it's not only your blood, but also people who are his shagids is keeping his work alive. Don't you ever compromise. Don't ever compromise the kind of, because it is you and your shagids will make a new gharana. That is Shankar Gharana. ये होगा और कुछ हो या ना हो, लेकिन शंकर घराना होगा, जैसे मैहर घराना भी उसी से तो निकलता है. Thank you, Didi. Thank you very much for Also coming. love Anushka, we are very proud of her. Yes. कहना Yes. बहुत आसान है. इस लड़की ने मेहनत किया. She is not getting the fame because she is daughter of Ravi Shankar. वो खुद creative artist है. Yes. उनके बच्चे तो creative होना ही हुआ, उनका खून जो है होना ही हुआ. We are proud of Anushka also. And कुछ भी हो उनके शागिर्द को जैसे, अच्छा, let me tell you one thing. ये जो अभी आपने सुदीप को सुना, उसके पास बंदिशें हैं. I'm very bad with names. और वो रामनाथ जमते की तरह एक रविशंकर नाम याद रहता, किसी का नाम नहीं याद रहता. बात सच है. लेकिन I don't know, some Bhattacharya, who was Rohidas, one of the first students. He has in Banaras written all the bandishes that he has learned from him. I think you should collect that. Sudeep Chattopadhyay has that. एक इतना अच्छा इंसान, इतना जीनियस, ईश्वर के तुल्य जो आदमी है, उनके बच्चे तो बहुत कमाल के होंगे, चाहे वो अनुष्का हो या नोरा जोन्स हो. We are very proud of her. God bless them with long life, because as long as they are living, people who are ignorant will remember the name Ravi Shankar. Thank you, Didi. Thank you very much for coming. Thank you very much for taking us on a beautiful journey. Beautiful journey, I would say. And Thank you. we love you from the core of our heart. Our pranams to you. And we'll meet soon, inshallah. And you take care of yourself and stay safe, Didi. Take care. बहुत अच्छा गौरव, अच्छा बजाओ और शुद्ध बजाओ. जी. I will try Thank my you. best. Thank you very much. Nabarun. Thank you. Thank you, Didi. Pranam. And Coming. Nabarun, many Detail, happy returns detail. of the day. Happy birthday. Thank you, Dada. Thank you, have Dada. a great Happy life. birthday. Thank you, Didi. Thank you. It was really our honor to have you in our show. And we will meet soon after this pandemic is over. And over to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. Tomorrow at 8 p.m. we will be once again here with other eminent personality talking about and sharing the memories of Pandit Ravi Shankar ji. Till then, good night. Stay safe. Dada, good night. Thank you. Thank you, Nabarun. Good night. you. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.